लेख the solution of equation 3 नहीं नहीं सुना तुम क्लासिकल कौन पढ़ाई थी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जिम्नेट आ टिके अछि सेतरे हला ताले सॉरी वर्ड देखो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड पॉइंट कौन क्वांटम पढ़ा खाता तो गोटे नहीं के तो जानी हो क्वांटम पढ़ा हो क्वांटम डॉलर लिए देखो इक्वेशन 3 z equal to कौन लिख लिया कौन z equal to a naught e to the power I omega naught t इक्वेशन 8 कौन लगला इक्वेशन 8 and real z equal to real z कौन होगा z equal to a naught cos omega naught t where a naught is constant अच्छा एटा को जो हमें भागी के लिखा e to the power i omega t कौन लिखा cos omega t plus I sin omega t so real z कौन हो I डॉट का अंदर रखो I डॉट कौन दे रहा है cos अरे एटा को हो इलेक्ट्रिक कौन लिखो ये लिखोगे cos omega naught t plus I sin omega naught t मिली so अब रियल पार्ट है ना क्या की मान जाएगा तो हमें रियल z लिखना है इसलिए लिखो रियल z इक्वल टू a naught cos omega naught t हैला so लिखो the equation 8 the equation 8 corresponds to linearly polarized vibration of r vector small r vector with frequency omega naught अब लिखो z1 equal to a1 e to the power I omega 1 t इस साइड पे लिखो ऐसे दे दो এটা স্পেস লিখো और लिखो z2 equal to a2 e to the power I omega 2 t तो z1 a1 e I omega 1 t the side पे लिखो left circularly polarized हाँ एरा मार्क देख लिखो left circularly polarized with frequency nu 1 equal to nu naught plus delta nu सेटा लिखो nu 1 equal to nu naught plus delta nu देखो z2 equal to a2 e to the power I omega t ता साइड रे लिखो is right circularly polarized
is right circularly. अरे Z1 होची left circularly polarized, Z2 होची इस साइड में तो right circularly polarized. इथे लिखो right circularly polarized with frequency nu equal to nu naught minus delta nu. सो ये कौन है ना दी जो जीमेन इफेक्ट रो Z1 गोटे वाला Z2 वाला तार nu1 nu2 nu1 टा कौन हो nu naught plus delta nu आ गोटे होची nu naught minus delta nu फ्रीक्वेंसी दीटा. सो एबे कौन हो हमन देखथिले नॉर्मल जीमेन इफेक्ट देखछे तार केतेटा लाइन आसो तीनटा लाइन आसो तीनटा रो गोटे nu naught plus delta nu गोटे nu naught minus delta nu गोटे सर्कुलरली पोलराइज गोटे साइड आ गोटे होची राइट सर्कुलराइज आ गोटे होची लेफ्ट हला लाइक व्हेन वी viewed transversely along y cap transversely along y cap that is right angle to b vector that is right angle to b vector that is y equal to 0 that is y equal to 0. एबे हमें देखो प्रथम हमें देखथिले लॉन्जिट्यूडिनल व्यू देखथिले एबे ट्रांसवर्स व्यू देखियो डायग्राम देखो डायग्राम रे लिखा है लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स व्यू हला डायग्राम नहीं काज वगैरह डायग्राम बनै न के कहू छ डायग्राम बनै डायग्राम के कहू छ बनै न बनै छ डायग्राम तू किछि लेखनु काई देखिलु खातर ओ डायग्राम आगे खड़ा नहीं बना डायग्राम लेखो y equal to 0 and solution becomes so I लिखो x equal to a1 cos omega 1t out of the a2 x equal to a2 cos omega 2t एडी साइड पे एमिति कर देथिबो out of the x equal to a0 cos omega 1t फर्स्ट केस रे लिखो एटी लिखो एटी लिखो लिनियरली पोटेंशियल ए किए ओमोद्र अंतर चंदी ये जो कुमुद्र हां तमे ओटे फॉलो करिबा ए देखो से जो आई टू आई पॉइंट रे लिखो हां गटे एटा गटे हला linearly potential vibration of r vector along x of frequency nu1 and nu2 respectively थर्ड पॉइंट लिखो x equal to a0 cos omega 0 t cos omega 0 t omega 0 t ता साइड रे लिखो
लगेला अरे फ्रीक्वेंसी एटा थर्ड पॉइंट रे लिखो लिनियरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन ऑफ आर वेक्टर linearly polarized vibration of r vector along z of frequency nu naught of nu naught thus देखो तौल next paragraph thus occurrence of three lines in transverse view is explained देखो तो तीनटा आम ट्रांसवर्स व्यू रे देखले से सब रियल पार्ट गुड़ा आछी देखो कॉस टर्म में आसे नहीं कॉस टर्म में आसीबो आउ देखो फास्ट जो दीटा लाइन पड़ले नहीं x i to i रे देखो a1 a2 सब से दीटा लाइन कोन होबो ना न्यू सेटा एटा होची मिडरेटर एटा होची एकदम थर्ड पॉइंट होची एटा ए लाइनटा आउ दीटा लाइन जो होची ए दीटा लाइन होची कोन ना ए दीटा पॉइंट हैला तो ट्रांसवर्स व्यू रो cos ओमेगा t टा आसे मन रखियो cos टा होची हम रियल पार्ट ऑफ द जो आम ए टर्म नहीं नथि ए टर्म रो रियल पार्ट टा होची हमरो से लिखो एबे लिखो जीमान शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जीमान शिफ्ट SHIFT जीमान शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जीमान शिफ्ट कौन देखिए जीमान शिफ्ट लिखो डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू 2 इक्वल टू न्यू 1 माइनस equal to minus EB by 4 pi m मते कहले ए टर्म रे कोनटा कांस्टेंट और कोनटा वेरिएबल एटा रे देखो ए जो माइनस एटा रहला माइनस EB by 4m ए टर्म ला से कांस्टेंट टर्म नहीं तो लिख पर हैला b टा केवल देखो बीटा केवल जने हम मैग्नेटिक फील्ड जते चेंज करबा जीमेन शिफ्ट माने कोन कहलो ए जो लाइन ता तीनटा आसी ना तीनटा लाइन रो एटा शिफ्ट केते होछ धर एटा न्यू 1 अछि न्यू नॉट एटा न्यू 1 एटा अछि न्यू 2 ताले डिफरेंस तो देखो न्यू रो एटा केते डिफरेंस एटा केते डिफरेंस एटा अछि जीमेन शिफ्ट डिपेंड करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मन रखियो एग्जाम में पचारियो ए फार्मूला मन रखियो फार्मूला मन रखियो और प्रॉब्लम भी पचारियो ठीक है डेल्टा न्यू इक्वल टू माइनस EB बाय 4 pi m ना एमनी की तरह से एमनी के लिए लिखे रखियो अपने हाथ की केटू बोले वो रिलेक्शन करो ए ना एमनी जगह लिखो जेमति के डिफे करबो या माने या माने होची गोटे एंट्रेंस रे तो नाम जतले बाहरिबो हला जतले तू गोटे सिलेक्ट हे के कोडे जितु यूपीएससी हां जाने सिंगदेव हबो नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर बहुत ए देखो यूजिंग न्यू इक्वल टू केते लेखो यूजिंग न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा माने अछि कि नहीं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू c हला तो यूजिंग न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा डेल्टा न्यू केते लिखबो डेल्टा न्यू इक्वल टू माइनस c बाय लैम्डा स्क्वायर
वेरी गुड जड़े ही केवल जान डेरिवेटिव इज 1 by lambda is minus 1 by lambda square so it is lambda actually del lambda square no डेरिवेटिव जड़े जाने गले है हाँ ढाबा मारिका ढाबा हो जहाँ तोरे एमसीक्यू क्वेश्चन करते तो ढाबा मान लो ठीक कर आंसर ठीक ना नहीं एक पास करा हुई थी ना टॉपर कहीं के हमला कौन सी टॉपर हो अब हाँ प्रशांत ना ना पढ़ो नहीं ये मेहनत कर जी हला ताको एनकरेज कर देखो ताको नेगेटिव साइन shows that the negative sign shows that as lambda increases shows that lambda as lambda negative sign shows that as lambda increases कौन कि lambda यदि increase कला एक क्वेश्चन में lambda यदि increase कला new टा कौन होगा ठीक है देखो new decreases as lambda increases new decreases negative sign कर दिया था ठीक है ये lambda यदि increase करेगा तो new टा decrease करेगा full stop leka so dropping drop ing dropping negative sign Zeeman effect dropping negative sign Zeeman shift of wavelength Zeeman swift कौन ले बुझे sh की है ना shift Zeeman shift of wavelength by 4 pi and c equal to it is equal nu l lambda square so nu l ta kon Larmor frequency where lambda ठीक है भया तो इधर पुट कर रखते हैं इधर नहीं से पुट कर क्या करते हैं देखो भया लैम्डा n भया लैम्डा n इक्वल टू लक्षण एटा देखो एटा আছে না এটি কোন কোন নাই কইলা তোমার নিউ इक्वल टू c by lambda হলা তো c by যদি lambda আমি নেবা তাহলে এটা লিখো এটা হচ্ছে Larmor frequency এটা লিখো eb by 4 pi n এটা হচ্ছে Larmor frequency lambda লেখা নিউ l নয় তাহলে সেই by তো এটা को से कौन করছে নিউ l इक्वल टू से আসবে nu l equal to c by lambda l so lambda equal to कौन होगा c by nu l यदि nu l टा ऊपर को वाला c by lambda l ए वैल्यू टा एको मैच वाला ए वैल्यू टा आसे nu l के वैल्यू दीजिए कांस्टेंट के वैल्यू फ्रीक्वेंसी अरे लैम्डा लिखছি वैल्यू आएगा नेमो देखो এটা नहीं मैं এটা ট্রাই করতে যদি এটা আমরা কোনি দিব নিউ ইয়ার ইকুয়াল টু আমরা ল্যাম্ডা ধরে ঠিক হলা এটা তলকু আসলে এটি সি টর্মটা সে মিস করছি না এটি সি লিখছি নাই কারণ সেই পটে ঠিক পাবে আচ্ছা তাহলে নিউ ইয়ার ইকুয়াল টু ইবি বাই 4 বাই n r0
फ्रिक्वेंसी तार ठीक अच्छे काली नोट्स पठाइला आ टिके डिटेल्स सेटा देखियो काली जो पठे केते नंबर पेज रे थिला एटा सरला क्लासिकल एक्सप्लेनेशन फॉर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट यार कौन क्वांटम टा करिवो क्वांटम ऑफ नॉर्मल हां कोनटा एटा क्वांटम नेक्स्ट क्लास गोटे क्लास आबे कोन बोली रिलेशन खाता कर दिए बाकी थी लगी सेकंड थी न्यूक्लियर केते आवे माने गोटे दीटा टन टन रे अटकी से तार आम पढ़ी थिकनेस कर नथिले पेनिट्रेशन पावर पढ़ते अल्फा बीटा गामा जो पेनिट्रेशन मन पका थिकनेस तो से जो थिकनेस अधिक हो हम ना तो सी गोटे पेज रखिए सीधा साइड बाटे तो क्लोज कर परा रेडिएशन थिकनेस ऊपर डिपेंड कर माने जदि एटा टिके भी कोना थिबो तादी क्रॉस कर जे टन सब न दिबु टन सब न दिले भी से गोटे क्रॉस करना आ गोटे थिबो तार ए न्यूक्लियर का देलो कोन बाकी छला आनी छु के नहीं केते पेज तक हम नवेम्बर 15 सुधा सिलेबस सरियार नवेम्बर 15 सरले ये प्रैक्टिस करियो हटे हाँ सेफ स्टोरी तो तू जहाँ करुचु रूम रे जाऊचु शोचु फ्री फायर खेलुचु बीजीएमआई सत कहूँ फ्री फायर खेलनी कि बीजीएमआई एटा केते सरतला ना एटा आयनाइजेशन चैम्बर केते बळे जायतिला 2i ना 2i स्टार्ट बोले तो ओया 2i आनी ओया हेडिंग करो ओया है सेटा गोटे सरला एटा सार दबा एटा भी अल्प बाकी थिला सार दो ओयर लेखो ओयर WIRE 2i पॉइंट पर एटा 2i थिला हादसा वाला कोई भी जे क्वांटम का मोटे मॉडल लेखनी तो एटा तो
कौन बोलते रॉक नोट तो नोट्स है समस्त नोट्स खाता खाली नहीं नोट्स खाता खाली नहीं कैसे मु चेक करी क्वांटम आ न्यूक्लियर कार कार अच्छी कहलो क्वांटम अलग न्यूक्लियर अलग अच्छी तुम दिखार भी नहीं क्वांटम खाता अलग ना न्यूक्लियर तो कौन कर कौन घरे खाता दीटा धरिकी आस ना एठी माने आसुच हॉस्टेल दीटा खाता आनिब क्वांटम पढ़ाले क्वांटम लिखिब किछि नोट्स लिखुन डाउट रे आउ कहा आगे कह देखो वायर लिख ए थीन कोएक्सियल वायर ए थीन लिखुन कहीं तू भी नोट्स करूनु सिंपल जिनस जितेटा पेपर सेतेटा खाता हवा दरकार केवल 3टा पिला नोट्स करेंगे आ सब कौन ये गध आस सब पढ़िया तुमको प्रथम रू कही जे अलग अलग नोट्स सब कर तो नोट्स अच्छी ना से रफ नोट्रे सब रफ नोट हेले तू धर गोटे पेपर एग्जाम देव केमती खोजबू बही आनिक पढ़देबू कौन करू कह बेड हेबिट एगुड़ा सब खाली गोटे एमएससी कर कि बीएड कर बीएड कौन गोटे सब खातर सब करदेबू एटलिस्ट तो जिते पेपर से खाता कर कि करून कौच मु स्टूडेंट्स मु बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स हेल्ले हम कि सेमती रेस्पॉन्सिबिलिटी नाई यू आर नॉट एक्टिंग लाइक ए स्टूडेंट्स बट आई एम ए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स मु मो पुत्र कर्तव्य करी मु कह मो बापा से मो बापा को किसी मानुथि कि मो बापा पर सी मो जत पर्यटन तो बापा ना कौन ना मो बापा हूँ कि मुझे देखला कि मानुनी घर कथा कि मानुनी किसी साहाय्य करूनी किसी ही करूनी रेस्पॉन्सिबिलिटी न रही कौन कर देख वायर लेख ए थीन कोएक्सियल वायर enclosed in a glass envelope होती ENVELOPE 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 in which some inert gas is filled comma serves as diode serve SERV serves as anode serves as anode ए लिखियो कैपिटल ए एनोटा कैपिटल ए लिखले कैथोड कैपिटल सी लिखले फुल स्टॉप दिस एनोड वायर WIRE is well insulated wire लिखियो this anode wire 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 is well insulated from the cylinder to minimize the effect of leakage current across the insulator on account of moisture 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 or impurities
full stop. Usually a wire wire of tungsten, usually a wire of tungsten, tungsten, tungsten is used as an anode, anode. So एटी गोटे वायर यूज हम जे वायर कौन हम ना गोटे इनोट गैस चेम्बर रोटे सिलिंड्रिकल चेम्बर अच्छे चेम्बर भर गोटे वायर पास कर गोटे तार पास हो तार ता साइड कौन थी इनोट गैस फिल है सो से चेम्बर टाक एमती इनसुलेटेड कर बाहर जो मॉइस्चर अच्छी कि इम्प्यूरिटीज अच्छी भर को जीव ना। थर्ड पॉइंट लिख हाई टेंशन। थर्ड पॉइंट 3 बे 2i माने i डबल i लिखिबो डबल i एटा ट्रिपल i हो हाई टेंशन लिख लो। हाई टेंशन लिखा जाए h डॉट t हाई टेंशन। सो हाई टेंशन लिखो ए सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied between the electrodes through a high tension battery full stop। केड़ा बुझिनी कहली परा तो आड़ ध्यान आड़े बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। बे गोटे वायर अच्छी तार है से प्राय आम टंगस्टन यूज करूँ से वायरटा कौन है सिलिंडर चित्र अच्छी इमेजिन करो सिलिंडर अच्छी सिलिंडर जो डायग्राम होता भर गोटे वायर पास से वायर चारिपटे कौन अच्छी गैस फील्ड इनोट गैस कौन अच्छे इनोट गैस कहीं हुए इनोट गैस हुए सेटा आउ का सहित रिएक्शन करबो नाही से जो सिलिंडर को एमएटी वेल इन्सुलेटेड कराई जो द्वारा कि बाहर जो मॉइस्चर अच्छी कि इम्प्यूरिटी अच्छी ता भीतर को एंट्री करबो नाही यदि मॉइस्चर और इम्प्यूरिटी एंट्री करियो कोन हो वायरटा नष्ट हो तेणु ताको वेल इन्सुलेटेड करा जाए। और हाई टेंशन बैटरी माने आम गोटे बैटरी नवा जोटा कि पावरफुल बैटरी तार वोल्टेज बेसी थी लेख हाई टेंशन बैटरी दिस फुल स्टॉप दियो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई लिखियो तू ये फिर मन रे इलेक्ट्रिक फील्ड जानी परिबो ई डॉट एप आउ गोटे किस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड is determined using the relation E equal to V by D electric field equal to V by D where V is the potential difference between the electrodes माइनर क्लास अच्छे ना कौन बोलो माइनस आसे जे ये जो माइनस V by D डेल V by डेल L हला एटी किंतु आसीबो ना माने सेटा तुम ऊपर डिपेंड करे बेले बेले एटा जो मैग्नेटिक रूल कराई एटा V by D तार फार्मूला कोन है माइनस dV by dl बा माइनस ग्रेड V मने अछि ना पोटेंशियल between the electrodes potential difference between the electrodes and d is the distance between electrodes
इलेक्ट्रॉन्स आई भी लिख आई भी पॉइंट आ कौन थिला कहलो इंस्ट्रूमेंट रो डायग्राम रो के मन रखछ आ कौन कौन बाकी रही छी आ दीटा हां रेजिस्टेंस गुटे अछि आ गुटे कोन अछि एम्प्लीफायर अछि सो आई भी रे होछ लेख रेजिस्टेंस लेखो दी रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर लिखो दी रेजिस्टेंस कैपिटल आर controls the current signal which is proportional to the number of electrons collected by the electrode V point लिखो V एम्पलीफायर फिफ्थ पॉइंट V होची एम्पलीफायर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड पल्सेस PULSES pulses of small magnitudes the current producing is of the order magnitude पर full stop दियो the current produced is of the order of 10 to the power minus 12 ampere and so a sensitive amplifier converts a weak signal weak signal into a strong signal full stop the pulse height is proportional height is proportional to relative number of ions reaching the anode full stop तापर लिखो the pulse height depends upon the pulse height depends depend depends upon ABC करके लिखिबो ABC पॉइंट करके ए रे लिखो external applied voltage between anode and cathode B point रे लिखो point B type of ionization event ब्रैकेट दियो ब्रैकेट स्टार्ट करो लिखो whether pulse is created by alpha beta gamma rays etc
और अल्फा बीटा गामा रेज किंबा एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट सी रे लिख द डिजाइन ऑफ चेंबर। देखो रेजिस्टेंस कौन करे रेजिस्टेंस पॉइंट रे लिख एटे सरला रेजिस्टेंस देखो से कही जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोटे आमर जो रहिला इलेक्ट्रोड गुड़ा रहिला तो रेजिस्टेंस कहाँ पर डिपेंड करिवो ना रेजिस्टेंस डिपेंड करिवो नंबर एबे ये सारा टंक सारा क्लास अछि ना आसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केते पास करूची माने कलेक्ट होची जो एनोड अछि सेरे जति नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होबो डिपेंड करिवो रेजिस्टेंस हला रेजिस्टेंस डिपेंड करिवो तापर। फोर्थ वन एम्पलीफायर कौन करे ना देखो जो करंट रो मैग्नीट्यूड करे 10 टू द पावर माइनस 12 माने बहुत स्मॉल हला धर मु या को 5 एम्पीयर करंट देली ताले सेटा फटा जानि होबो किंतु जे 10 टू द माइनस होइला माइनस 12 रहिला ताले बहुत स्मॉल तो ताको एम्पलीफाई करिके माने ताको ଟିକେ हाई अमाउंट करियो एगुडे एम्पलीफायर दरकार तो एम्पलीफायर कौन करियो ना जो करंट आस्टर 10 टू द माइनस 12 रो ताको एम्पलीफाई करिके सेटा को सिग्नल रो कन्वर्ट करला हला सिग्नल टा कन्वर्ट करला तापर पल्स हाइट टा डिपेंड करिवो माने पल्स माने बुझते तो वेव टा धर ए जे पल्स माने जाउची ए हाइट हुआ कहाँ पर डिपेंड करिवो ना जो अछि इलेक्ट्रोड अछि तार हाइट ऊपर डिपेंड करिवो। आ गोटे रहिला लास्ट पॉइंट रहिला पल्स हाइट टा कहाँ पर डिपेंड करिवो ना एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज एनोड कैथोड भीतर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज आयनाइजेशन इवेंट सेटा अल्फा किबा बीटा किबा गामा रेस कहाँ थ्रो रहउची ता ऊपर डिपेंड करिवो। तापर चेंबर रो डिजाइन ऊपर भी डिपेंड करिवो